factor scores, you can run discriminant analysis. And you can even predict whether, say, gender is the, okay, what is discriminant analysis? Let me start with that. Can you give any example of discriminant analysis? How the dependent variable is different in discriminant analysis. What is discriminant analysis? Purchase, won't purchase, ring any bells, or defaulter, non-defaulter. What is discriminant analysis? Okay, so we discussed about discriminant It's one in which the dependent variable is categorical. Yes, the dependent variable is categorical. So based on some independent variables, say you have to decide whether a person will pay the loan or not. So that is the main difference, that you classify your respondents based on some independent variables, but you classify in categories. So dependent variable is categorical. That is what we discussed. We also discussed how it is similar with or different with ANOVA and regression. And then we discuss some examples, say heavy, medium, light users, how they are different, or whether a person will purchase or not purchase. In Ellen Jeans also we had these questions that we had to solve, that whether there is, what was the question in this case, which we solved using discriminant analysis? What reasons do different category of male preferences to buy a product by male and females? How this is different, how these preferences changes by gender, whether there is any difference in male and female in terms of the factors which are important for selecting genes. So whether these consumer preferences are different in these two category, as in one category, in males and females. So we did discriminant analysis for that, but let's check the data. Let me go to, so this is the data, right? Respondent number, gender, availability. There was these 15-16 parameters, and after running factor analysis, we zeroed down to some 5-6 parameters. Let's do everything on SPSS. Let me stop sharing this screen. Okay. Okay, can you see this? This SPSS file, are you able to see this? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Great. Okay, so you can see from variable view that how many variables you have. So already in data we had यहाँ तक, ठीक है, finish तक ये variables है हमारे पास, right? ये variables नहीं थे. I'll talk about, these are the factor scores that I have created. I'll do that. But in data we had only these variables, right? हमने factor analysis कितने variables पे run किया था? 16 पे या 15 पे? 15 वेरिएबल्स पे. कौन सा वेरिएबल हमने नहीं लिया था? जेंडर. हाँ, जेंडर हमने नहीं लिया था. ओके, सो लेट्स डू वन थिंग. ओके, सो just one second. Okay, how to run factor analysis? You go to analyze, फिर क्या करते हैं? What we do? Classify or dimension reduction? Dimension reduction. Yes, you go to dimension reduction, you go to factor, and then you put all the variables, right? So all these variables are here. I have not kept gender. Gender idhar hi hai, it's on left. But availability, variety, easy care, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Right? 15 variables. पे हमें factor run करना है. Then we go to descriptors.
and we select initial solution, KMO and Bartlett test, and reproduce. Okay, KMO and Bartlett test tells whether null hypothesis is, reject or not, whether we can do factor analysis and all. I'm not going in detail, just to give you a quick, recap of how to do factor analysis. So we do this, we select this in descriptives, and then we go to extraction. So the method that we use is, what is the method that we use here? PCA, that is principal component analysis. And say unrotated factor solution, we need scree plot also, and we want eigenvalues which are greater than, how do we select the number of factors? Eigenvalues greater than 1. 1. Yes, eigenvalues greater than 1, and then we continue. Okay. And after that, there is something called rotation. Why do we go for rotation? What are we doing in rotation? We select varimax. कुछ वैल्यूज होती है ना जो रोटेट कर देते हैं, वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है वैल्यू, एक्सेस चेंज करते हैं हम, जिसमें हम एक्सेस चेंज कर देते हैं. 90 degree. हाँ, varimax is 90 degree. तो oblique rotation भी होता है less than 90. So we are selecting varimax, that is orthogonal 90 degree पे हम axis rotate करते हैं, so that interpretability हमारी better हो जाए, but हमारा total variance की value same रहती है. Okay, so we continue rotated solution, we continue here, and then we go to scores. I didn't cover this. Save as variables, factor scores. Factor scores क्या होते हैं? These are the scores for individual respondent. Okay, for if you are doing any subsequent analysis, so you can save your factor scores and you can run regression, या फिर cluster analysis, all these things you can do. So इस regression में यहाँ पर I have selected regression and I'm running these factor scores. I'm saving these factor scores. Okay. Continue. Okay. And then I get this screen. Are you able to see this KMO and Bartlett test wali screen, or shall I stop sharing? ma'am. Okay, so are you able to see this? Okay, then in SPSS output only, I'll show you one thing first. So this screen, Ellen Jean's data, variable view. Can you see this? Gender availability variable view. Yes, ma'am. तो हमारे पास ये वाले वेरिएबल्स नहीं थे, रिमेम्बर? हमारे पास सिर्फ यहाँ तक डेटा था, ये मैंने आई हैव क्रिएटेड दिस, बट व्हेन आई सेव दीज फैक्टर स्कोर्स, तो मेरे पास इस डेटा में ये वेरिएबल्स क्रिएट होकर आते हैं. दीज आर फैक्टर स्कोर्स एंड देन यू कैन रीनेम इट. So factor 1 say was product variety, so I renamed it, and you can rename it like this, product varieties. Okay, so I already have this variable, so I can say pro variety. Okay, what you can do is you can also rename these labels also. Okay, prod underscore variety, say like this. So the idea is that when you run factor analysis and then you got that window, जिसमें scores में you can save your factor scores, and then these factor scores comes in this data set. ठीक है, these 6 factor scores, ये prod variety जो अभी हमने name किया है. Okay, so I'm deleting these ones. I already have these 6 factors, so I'm deleting these ones. Okay, so next what I'm going to do is, so for example, if I have to run cluster analysis, you already have question in your questionnaire ki what are the important parameters when a person is selecting, say, whey protein, or say shopping online, or say e-payment services, or shoes, or beer, or whatever, advertisements.
So you already have these variables. ये सारे तुम्हारी variables हैं जिस पे तुम factor run करोगे. Okay, and then you can get what are the important factors. All right. If you have to club, see, if you have to do cluster analysis, ki based on these consumer behavior, if I have to club my respondents, if I have to make those segments, so how to do cluster analysis? So we can also run cluster analysis on this. We can run it either on these variables, in par bhi kar sakte hain, or what we can do is, I already have these factors, ye 6 factors. I can run cluster analysis on these factors also. Okay, so let's do cluster analysis. So what you do is you go to analyze and then you go to classify. Okay, in cluster analysis we'll do both hierarchical and k-means clustering. In hierarchical clustering you get dendrogram, tree like figure. Remember dendrogram, कुछ tree like चीज थी और फिर हम उसे कट कर रहे थे. Yes, ma'am. So what I have kept here is ये variables, these are all the 6 factors. जो 15 parameters से जो मेरे 6 factors आए थे, I am running my cluster analysis. Basically, I am grouping people based on these factors. ठीक है? So these are the variables that I have kept here. And then cases, you statistics plots, then you go to statistics. And then you select agglomeration schedule. Remember agglomeration schedule एक table थी, and then we were seeing कि how in next stage who all clusters are joining. And last के 3 पे हमने dip देखा था, and then we suggested that इतने number of cases है minus this number, these many respondents, clusters should be there. So you select these agglomeration schedule. Range of solution you can keep 2 to 4. After that you select method. So we selected Ward's method for it. So remember linkage, there are various methods of linkages within group, centroid method, different types of linkages. Okay, and I discussed something about similarity. How do you know, how machine knows whether a person will fall in that cluster? How it measures similarity? It measures similarity based on how it checks similarity. Remember distance formula. So we select squared Euclidean distance. Remember I showed you one table with income and occupation, and I mentioned that it checks similarity by the distance. कि कितना कम distance होगा उतने ज़्यादा similar होंगे या dissimilar होंगे respondents. जितना कम distance होगा उतना Ma'am, less distance means they are similar. Yes, less distance means they are similar. Okay, so here we select squared Euclidean distance. It's the same distance formula. You continue with that and save. You can also save these, solution. That's up to you. If you want to save that solution, you can save that. And we can also run cross tab after doing that. So save bhi kar sakte hain. All right, continue and go. Okay. Let me share the screen, another screen, that is the output screen. Okay, so we ran this factor analysis first, and on that data I showed you how to run cluster analysis. We ran cluster analysis, but right now we have just done it using hierarchical clustering. To profile your clusters, you need to, okay, wait, we have not done selected dendrogram. So dendrogram is not coming here. Let me share that dendrogram also. Okay. So analyze, I go to classify, I go to hierarchical cluster. Yes, stats, agglomeration, this method, square Euclidean, yes.
Label faces by this. Plots. I want plots. And in plots, I have dendrogram. Yes. Continue. So now I'll get dendrogram also. I say okay. Okay, before I show you that dendrogram, let me do one more thing. Now, what I'll do is next is that I'll do k-mean clustering. Okay, so no, let's first see that dendrogram. So once you, first of all, you have to run hierarchical clustering. And after running hierarchical clustering, you see that dendrogram. And from dendrogram, you see कि कितने clusters तुम्हारे आ रहे हैं. Okay, so you get this kind of dendrogram. Okay, so but it's very difficult to see it from this, you know, on this window. So what you can do is just copy paste it on your PPT or on Word document. So what I have done is, one second. Yeah, here it is. So what I've done is I have copy pasted it on this PPT so that I can see it clearly, and you can then check कि कितने clusters होने चाहिए. So how many clusters? Shall I cut it here? Okay, here. So it's going to be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. या फिर और बाद में इसे कट करना चाहिए. Say here 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Right? Are you able to get this? हमने कहाँ पर कट किया इसे? So this is the kind of iteration you have to do कि 5 clusters ज़्यादा better है या 7 clusters ज़्यादा better है. Here I cut it here, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So by running hierarchical clustering, you will get this dendrogram. इस dendrogram से you can easily see कि कितने clusters होने चाहिए. Either it should be 5 or it should be 9. 9 बहुत ज़्यादा लग रहे थे. So I decided that let's go with 5. Okay. Now what we have to do is when you run k-means clustering, you have to input this number कि कितने clusters तुम्हें चाहिए. So you have this. Just a second. You have this SPSS and one second. Okay, there's some lag, so it's coming. Wait a minute. Yes, hold on 1 second. Why is it happening? Is it because of internet connection? Okay. Yes. So now we are running cluster analysis, but now we are running k-means clustering. We saw from our dendrogram कि कितने clusters आ रहे थे अभी? कितने clusters आ रहे थे? Some 5 or 6 या 6 या फिर 5.
Okay, Six. okay, we'll start with we'll do with 6. ठीक है. So जो भी factors थे हमने similarly जैसे हमने hierarchical clustering करी थी वैसे ही we are going to do it this in k-means also. What we have to do is extra in k-means is हम k-means में already mention करते हैं कि how many clusters we want. Say if you are saying 6, okay, let's put 6 here. And in options you select initial cluster centers, you select cluster information, ये सब select करना है तुम्हें. And yes, okay, so let me share that screen with you where we get this output, and then we'll get this output. Okay, and then you get this finer cluster centers. So इसके basis पे you have to do the profiling. Remember हमने Nike case जब किया था awareness, preference, and we profile these clusters. कुछ cluster में ये था कि awareness ज़्यादा थी पर purchase intention नहीं थी, and some clusters were high on awareness, on purchase intention, loyalty, सब पे high थे. सो प्रोडक्ट वेराइटीज, अपडेटेड ट्रेंड्स, ये हमारे 6 फैक्टर्स थे. इन फैक्टर्स के बेसिस पे हमने रेस्पोंडेंट्स को ग्रुप किया है. सो लेट्स सी हाउ दीज क्लस्टर्स आर यू, कैन यू रीड दिस? सो यहाँ पर क्या होता है, व्हाट इज माइनस और व्हाट इज दिस पॉजिटिव इज टेलिंग if a value is higher than 0, okay, so that means that cluster is high on that variable. It is high as in it is above average on that variable. तो अगर मुझे ये क्लस्टर 5 डिफाइन करना है, से क्लस्टर 5, सो इट इज हाई ऑन प्रोडक्ट वेराइटीज. ये दिख रहा है तुम्हें? प्रोडक्ट वेराइटीज 1.072. एंड सो दिस इज हाउ यू डिफाइन दिस कि दिस क्लस्टर. यस, टेल मी. Ma'am, these names, product variety, updated trends, you have named yourself. हाँ, I have named it. So I showed you ना, दो factors बन के आते हैं, regression factor 1 ऐसे करके, and then I have changed, I have renamed these variables. Okay. So after that you get this, and you already know how to profile these clusters. Say अगर ये cluster 5 है, and you can add all other variables also, gender wise and all, I'll come on that, but first let's see, these are the segmenting variables. इन variables के basis पे मैंने clustering करी है. These are my segmenting variables. So you have to also identify कि जो factors वाले ही हैं, factors से तुम्हारे questionnaire में 15 parameters हैं, mass के लिए या whey protein, whatever, PTM, whatever, जो भी parameters हैं जिसपे तुम importance पूछ रहे हो कि for this category what is important. तो तुम उस पे फैक्टर रन कर सकते हो, एंड से यू कम विद 4 or 5 फैक्टर्स, एंड देन ऑन बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स तुम जो भी तुम्हारे रेस्पोंडेंट्स हैं, से 100 या 150 जितना भी सैंपल तुमने कवर किया है, देन यू कैन रन योर क्लस्टर एनालिसिस एंड यू विल गेट दिस टेबल. This table you get by running k-means clustering. Hierarchical clustering, that is one step. Using that you get that tree like structure, dendrogram. You decide on कि कितने cluster होने चाहिए, 5 or 6. Then you put this number. हमने number put किया था ना यहाँ पर. Yes. When you rename those factor scores, आपने पहला वाला product variety करा, so how did you know कि वो वाला product variety related है? अच्छा, जब हमने रन किया था, हमारे पास एक टेबल आई थी और हमने वो प्रोडक्ट वेराइटीज नेम किया था बेस्ड ऑन कॉम्बिनेटरी टेबल कि फैक्टर 1 इज प्रोडक्ट वेराइटीज. ये तो हमने खुद नेम किया था ना. रिमेम्बर वो टेबल जब क्लास में मैंने वो दिखाई थी तुम्हें टेबल कि लोडिंग्स कैसे आ रही थी कंपोनेंट मैट्रिक्स की. मैम, सो इसमें जो ऑलरेडी डेटा है उससे रिलेटेड हाँ, डेटा व्यू में से पता चला. मतलब I didn't get that. How did you rename that? एक सेकेंड. Let me share that data. ओके, ये हमारा डेटा था, राइट? जेंडर अवेलेबल, ये सब डेटा था हमारा.
फिनिश तक, या वेरिएबल व्यू में चेक करते हैं, वी हैड दीज 16 वेरिएबल्स. जेंडर हमारा वेरिएबल नहीं था, वी सिलेक्टेड ओनली अवेलेबिलिटी से फिनिश तक. सो हमने अभी फैक्टर रन किया, फैक्टर एनालिसिस रन किया, हमने फैक्टर स्कोर्स को सेव कर दिया. जब हमने फैक्टर स्कोर्स को सेव किया तो हमारे पास ये क्रिएट होके आए. ये ऐसे क्रिएट होके नहीं आएंगे, नो, इट विल कम एज factor 1 and 2 only. हाँ, फैक्टर 1 and 2 ओनली. बट जब आप फैक्टर एनालिसिस की आउटपुट टेबल देखते हो तो हमने फैक्टर को कैसे नेम करा है वो हमने की थी ये एक्सरसाइज की. आपकी जो आउटपुट टेबल में जो टेबल आती है कि फैक्टर 1 इज लोडिंग हाई, से 5 फैक्टर्स थे हमारी. फील इज लोडिंग हाई ऑन दिस फैक्टर, फिनिश इज लोडिंग हाई ऑन फैक्टर 1, easy care is loading high on factor 1. तो हमने इस फैक्टर को प्रोडक्ट वेराइटीज नेम दे दिया था. ये मैंने अभी तब मैंने सिर्फ पीपीटी पे ही किया था. तो मेरे पास फैक्टर 1 ऐसे ही बन के आएगा. ओके, प्रोडक्ट वेराइटीज लिखा हुआ नहीं आएगा. आई रीनेम्ड इट एज प्रोडक्ट वेराइटीज. Okay, so we'll have to interpret खुद कि ये सारे factors इस पे depend करते हैं, तो group का नाम क्या होगा? एग्जैक्टली. सो फैक्टर 1 में कौन कौन से फैक्टर्स लोड कर रहे हैं? सो प्रोडक्ट वेराइटीज वाले फैक्टर्स सब लोड कर रहे थे. आई थिंक इजी केयर, वेराइटी, ये हाई आ रहा था फैक्टर 1 में. तो फैक्टर 1 को प्रोडक्ट वेराइटीज नेम कर दिया. ओके, सो दिस इज हाउ वी डू दिस. एंड मैंने यहाँ पर वेरिएबल्स को भी, यहाँ लेबल्स को भी रीनेम कर दिया. फील्ड, फंक्शनल यूसेज. ओके, Okay, ma'am. Thank you. okay, so after that we got this output. Got this output, and based on this final cluster center we have to profile our clusters. So cluster 1 किस में हाई है, किस फैक्टर पे हाई है. So accordingly you have to profile it, you have to name it. Okay, define this. So for example, for cluster 5 is one which is high on product varieties, and it is very negative on feel. It is again high on marketing campaigns. So this is how you have to define, you have to profile your clusters. There's one more thing that you can do is, for example, मेरे data में there is one categorical variable, that is gender. But in case you have any categorical variable, अगर तुम frequency पूछ रहे हो या usership पूछ रहे हो, so what you can do is you can create one more variable that is on usage, medium, high usage, that kind of thing also you can do. Okay, so what I got is I have already saved these clusters thing also. So ये देख रहे हो, this CL_1. Yes, ma'am. So what you can do is you can also save these cluster membership also. ये cluster membership कैसे आई है, ये वाला variable. What you can do after that is yes. You can go to analyze, you can do simple cross tab also कि मेरे कौन से cluster में कितने, just a second, yeah, you can run cross tab also. Say you have to run cross tab of gender. I had only one variable, categorical variable gender. तो हमारे पास usage है like low, medium, high usage. वो तुम ले सकते हो gender, and then you can cross tab it with this cluster. Okay, you can do this also, and let's run it. Okay, let me show you the table, the output table, what the table that you'll get after running this cluster. So ये cross tab तुमने run किया, and you can get कि okay, in clusters में first cluster में कितने males हैं, कितने females हैं. This is one analysis that you can do.
और लाइक आई सेड कि फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे या कोई भी तुम्हारा वेरिएबल है, प्रोफाइलिंग वेरिएबल्स. ओके, सो समझ में आया व्हाट इज क्लस्टरिंग वेरिएबल, व्हाट इज प्रोफाइलिंग वेरिएबल. सेगमेंटिंग वेरिएबल क्या था इसमें हमारा, जिसके बेसिस पे हमने क्लस्टर किया. सेगमेंटिंग वेरिएबल क्या था, किसके बेसिस पे क्लस्टर किया, कौन सा वेरिएबल लिया था टू रन क्लस्टर एनालिसिस. क्लस्टर किसके बेसिस पे किया था, दीज प्रोडक्ट वैरायटीज, अपडेटेड ट्रेंड्स, फील्ड, जो हमारे फैक्टर्स थे उसके बेसिस पे हमने क्लस्टर किया था. एंड वी गॉट दीज 6 क्लस्टर्स. सो दैट्स अनदर थिंग कि जितने हमारे फैक्टर्स है उतने क्लस्टर्स हो गए. हम 5 सेलेक्ट करते तो 5 क्लस्टर्स होते. सो बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स वी अराइव्ड एट दीज क्लस्टर्स. इन 5 फैक्टर्स के बेसिस पे हमने ग्रुप किया. एंड देन what we did is we ran a cross tab ये इन्हीं clusters को कि how these males and females are different, how these males or females are coming in each cluster. Okay, so can you see कि सबसे कम males कौन से cluster में है. Although if you take the percentage then it will become much more clearer. Ma'am, fifth cluster. Yeah, 5th cluster 4 and here it is 11. Also यहाँ पर भी 5 and 13. So this is how you can profile your clusters. कि clusters में जो segmenting variable लिया है उससे how it is different. And then if you have any profiling variable जिससे तुम cross tab कर लोगे, then this is how you can define your clusters. Okay. Any confusion in this? Anything that you want to discuss and anything जो तुम्हारे project में तुम्हें confusion लग रहा है? Okay, ये समझ में आया that how you run cluster analysis, how you pick those segmenting variables. First of all, I ran it using hierarchical clustering. Hierarchical clustering से क्या आता है? You get dendrogram like this. Dendro. Yes. Yeah, you get this tree-like structure, this dendrogram. And based on this dendrogram, you select कि कितने variables, कहाँ पर इसे कट करें, तो कितने क्लस्टर होने चाहिए. एंड हाउ वी डिसाइड कि कहाँ पर कट करना चाहिए. On the basis of distance. On the basis of distance. So it should not be too, this should not be too large, the distance should not be too small. And you cut it here and see how many clusters you are getting. 6. Right. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then you plug in this number, you plug in this 6 number. तुम फिर दोबारा से run करते हो. First step is you run hierarchical. You get this dendrogram. Second step is you again run your cluster analysis, but you use k-means. और वहां पर क्या करोगे? In k-means you mention this number कि I want 6 clusters, and then you get this kind of profile, final cluster centers वाली table. You can profile your cluster based on this. Also, if you have any other variables like gender or say usage, heavy, medium, light users, or say income, high income group, middle income group, or what else, age, उन सबको तुम क्रॉस टैब कर सकते हो. लाइक आई शोड यू डिस्क्रिप्टिव में जस्ट रन क्रॉस टैब. ओके, ये क्लस्टर को तुम सेव कर दोगे, these cluster scores, and then you can cross tab. Okay, so do you have any question regarding your project कि उसमें कैसे करेंगे? Hope you are clear with this कि तुम्हारे पास कुछ questions ऐसे होंगे जिसमें तुम gender, age, income ये सब पूछ रहे हो. कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें तुम सेगमेंटिंग वेरिएबल के बारे में डिस्कस कर रहे हो. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड.
Right. Any question on this? Any question on your analysis? Anything that you are not able to understand abhi? Can we, Yeah. can we do regression on the basis of factor scores? Yes, you can do that. And that means we can do factor analysis. We can do regression after factor analysis. You can do that. Okay. Factor scores तुमने लिया as independent variables. And gender dependent. Gender, no, not gender. You need to take metric variable. तो recommendation वाला question या satisfaction वाला question. Okay. Take a dependent variable. कि ये सारे फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उसके बेसिस पे तुम्हारा सेटिस्फैक्शन बढ़ता है. तो अगेन बट सेटिस्फैक्शन एंड रिकमेंडेशन जो तुम करोगे वो तुम ब्रांड के लिए करोगे. तो ब्रांड का तुम फैक्टर एनालिसिस रन करोगे एंड देन ब्रांड के लिए ही जो रिकमेंडेशन और सेटिस्फैक्शन तुमने पूछा है उसका डिपेंडेंट वेरिएबल से तुम रिग्रेस कर सकते हो. Okay. तुम डिस्क्रिमिनेंट भी रन कर सकते हो. डिस्क्रिमिनेंट कैसे रन करोगे? डिस्क्रिमिनेंट से क्या देखोगे? फॉर एग्जाम्पल यू हैव जेंडर, तो तुम्हारे फैक्टर्स वो कैसे डिफर कर रहे हैं. जैसे हमने डिस्क्रिमिनेंट में देखा कि वेदर मेल एंड फीमेल, या एलएनजी में देखा वेदर मेल बाय मेल एंड फीमेल वेदर दीज प्रेफरेंसेस आर डिफरेंट और नॉट. So you can run discriminant analysis also. Okay. Yeah, any other question? Any other question? Regression समझ में आ गया कि कैसे कर सकते हैं. अगर तुम्हारा सिंपली तुम रिग्रेशन रन कर रहे हो और उसमें मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम आती है तो इट्स एडवाइजेबल दैट यू रन फर्स्ट फैक्टर एनालिसिस. अगर 15 पैरामीटर्स तुम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ले रहे थे तो you run factor analysis, you zero down to say 4 or 5 factors. उन फैक्टर का स्कोर्स लेते हो. फैक्टर स्कोर्स को अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर करके तुम रिग्रेशन रन कर सकते हो. ओके. इन्हीं फैक्टर स्कोर से मैंने अभी क्लस्टर एनालिसिस रन किया. आई रैन डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस आल्सो यूजिंग दीज फैक्टर स्कोर्स. क्लस्टर एनालिसिस में व्हेन यू आर रनिंग यू आर क्लियर विद दिस ना. हम ये दो क्लस्टर एनालिसिस क्यों रन करते हैं? हायरार्किकल क्लस्टरिंग क्यों करते हैं और के मींस क्यों करते हैं? नंबर ऑफ क्लस्टर्स किस में लिखते हैं? हायरार्किकल और के मींस? K means. Yes. So yes, remember that. So we run first step is to run hierarchical clustering. और उससे क्या होता है? Yeah, we get that tree-like structure that is called dendrogram, and based on that dendrogram we decide कि कितने cluster होने चाहिए. So it may happen कि जब तुम्हारा डेटा आएगा वो इतना ज्यादा क्लियर ना आए. हो सकता है कि 5 भी लग रहे हो तुम्हें, 6 भी लग रहे हो, 7 भी लग रहे हो. तो एक डेंडोग्राम you can create of 5, 6 and 7 and then see कि how they are different, whether they are making any sense or not. फॉर एग्जाम्पल जैसे नाइकी वाले केस में हमारा एक क्लस्टर आ रहा था जिसमें अवेयरनेस उनकी लो थी पर परचेज इंटेंशन हाई थी. दैट वाज नॉट मेकिंग सेंस. और whatever your data is, whatever your parameters are coming, you need to check कि अगर मेरा 5 cluster solution में रन करता हूँ, 6 cluster solution रन करता हूँ, 7 cluster solution रन करता हूँ, so how it is differing. Just read that cluster profile, एक बार उसे पढ़ना and then see whether 5 cluster solution is better, 6 is better or 7 is better. Then you decide on that. Okay. So that factor is done, cluster is done, discriminant, that is up to you whether you want to do or not. If you have that variable, then you can check कि income wise क्या in variables में difference आ रहा है या नहीं. कि when they select a product category, say mask अगर वो select करते हैं या whey protein select करते हैं तो income wise उनका कुछ difference आ रहा है क्या? If you have that variable. कुछ ऐसे statements होंगे, for example, price is important for me, quality is important for me. कौन से क्लस्टर के साथ प्राइस और क्वालिटी हाई आ रहा है और अगर तुम डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस रन करते हो तो क्या वो कनेक्शन बैठ रहा है क्या. और इफ वेदर यू आर डूइंग जस्ट सिंपल क्रॉस टैग रन करके देख रहे हो. ठीक है. सो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि हमें रिपोर्ट कैसे बनानी है, हाउ टू अप्रोच दैट. ये कहीं भी अगर डिफरेंस है देन यू हैव मल्टीपल वेज ऑफ चेकिंग इट. ओके. Yeah, this is done. Okay, I've covered this also.
Any confusion regarding SPSS, anything? If you have any problem regarding SPSS, do let me know in this week. Okay, next week में तो तुम्हें फिर present करना ही पड़ेगा, but I don't want कि कोई भी ऐसा हो कि हमें SPSS run करना नहीं आता, because it's very easy. So you should try your hands on that. It should not be like कि group में सिर्फ एक ही member ही कर रहा है. It's very easy. Like I showed you, if you want another session on this, we can do that. But are you confident in running SPSS or not? Or do you think और practice की ज़रूरत है? Or at least, you know, whatever data you are getting, try to run SPSS using that data. Okay, yeah, on data, one more thing. When you are getting the data in your Google Forms, okay, just save it in Excel sheet and keep only those variables that you need. Or usse then you get directly import from your SPSS. That is doable. You need not to code. Okay, that is one thing. Analysis किसी ने run करके देखा अभी? One of you mentioned कि 100 data आ गया है, और जो वो जब when you run that Google Forms ना, तुम्हारे पास वो graphs आते हैं, that is just descriptive. वो उसकी सिर्फ एक ही स्लाइड बनेगी कि how your on your respondent profile. उससे एनालिसिस कुछ खास नहीं होगा. उससे सिर्फ यही पता चलेगा कि तुमने कौन से रिस्पॉन्डेंट्स पिक किए हैं, तुम्हारा सैंपल कैसा दिख रहा है. दैट्स इट. यस, एनालिसिस किसी ने रन किया अभी तक या नहीं? No, ma'am, not. No, ma'am. तो अगर डेटा आ गया है तो ट्राई टू रन एनालिसिस, सी कोई प्रॉब्लम है डेटा में या कोई क्वेश्चन चेंज करने की जरूरत है या नहीं. या अगर तुम्हें अच्छा खासा सैंपल हो गया है, इवन अगर कम सैंपल भी हुआ है, तो एक बार डेटा चेक करो. ओके. एनीथिंग रिगार्डिंग एंड टर्म, एनीथिंग रिगार्डिंग मिड टर्म? मिड टर्म्स हमने देख लिया ना, सो आई कैन अपलोड इट ऑन SIS, राइट? और क्या किसी को कंफ्यूजन है, किसी को लग रहा है कि मार्क्स कम है? No, ma'am, you can upload them. Okay, thank you. After that, so in end term, you can see questions which are application based, maybe, you know, questionnaires or all those kinds of things. So questionnaire I have already discussed in groups in very detail कि किस type के questions होने चाहिए. In case you still have any confusion regarding questionnaire, please do let me know. So ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में कोई questionnaire बनाने के लिए आए and again you get, you know, very less marks. ऐसा नहीं होना चाहिए. It's not that difficult. And now when you are doing project, you should have that idea. अब क्या थोड़ी क्लैरिटी आई ऑन क्वेश्चनर पे, या फिर स्टिल यू आर लाइक ऑन द सेम लेवल, और यू नीड मोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्वेश्चनर, या प्रोजेक्ट करके कोई क्लैरिटी आ रही है या नहीं आ रही है? आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज योर फीडबैक. अदरवाइज आई कैन कीप वन मोर सेशन ऑन क्वेश्चनर. जब तक बोलोगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा? So like I discussed, when you are preparing a questionnaire, the first thing is that you prepare sections. Okay, even in exams, if you are preparing a questionnaire and it has not mentioned about the sections, and you have say only 10 minutes, say 10 minutes, 15 minutes उस question को करने के लिए, तो prepare those sections first. कि ये रिस्पॉन्डेंट प्रोफाइल है, ये यहाँ पर ये जाएगा, यूसेज यहाँ पर जाएगा, कोई रिक्रूटमेंट क्वेश्चन पूछना है तो वो यहाँ पर जाएगा, रेटिंग पूछ रहे हैं, एटीट्यूड पूछ रहे हैं, प्रेफरेंस पूछ रहे हैं, कैसे कैप्चर करेंगे? It should be on interval or it should be on you know, dichotomous, that is your binary scale. So वो सब चीजें क्लैरिटी ज्यादा अच्छे से आ जाती है if you start with preparing those sections first. Okay, in next session after lunch break, I'll discuss more about report writing and all those things. Okay, so we can end it here now. All right then, bye bye. Thank you, ma'am.
Welcome. चली गई ना?